Hi friends, and how are you doing today? And thanks for connecting me for today's video जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं one of the important cue cards जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है if you're going to take your IELTS exam shortly. The cue card is describe a person whom you follow on social media. काफ़ी टाइम से ये क्यू कार्ड पूछा जा रहा है और काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग भी था, तो आज हम इसी का सैम्पल आंसर करेंगे. क्यूज आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं. नेम ऑफ द पर्सन ऑन विच प्लेटफॉर्म यू फॉलो हिम, Why you follow him, would you like to meet him personally. ये तो ऑब्वियस है, किसी ना किसी सेलिब्रिटी को हम फॉलो करते हैं तो पर्सनली तो क्यों नहीं मिलना चाहेंगे. किसी की भी बात कीजिए, आप अपने किसी फिल्म स्टार की बात कर सकते हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा की कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स स्टार की बात कर सकते हैं या किसी आर्टिस्ट की. और मैं यहाँ पर एक सिंगर की बात करने जा रहा हूँ, पंजाबी सिंगर है. नो मैटर आप कहाँ पे रहते हैं, पंजाबी सॉन्ग हर जगह पे सुने जाते हैं, इसीलिए शायद आजकल हर एक हिंदी मूवी में पंजाबी सॉन्ग ज़रूर होता है. कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं. अगर पंजाब में नहीं रहते हैं तो कौन से स्टेट में और क्या वहाँ पर पंजाबी गाने सुनते हैं, और आपका भी फेवरेट पंजाबी सॉन्ग अगर कोई है तो वो कौन सा है. बात होने जा रही है दिलजीत दोसांझ की. ये एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, सिंगर के साथ साथ एक्टर भी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो यंगस्टर्स को बहुत पसंद है. सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपने आने वाले म्यूज़िक एल्बम्स या सॉन्ग्स को वो डेफिनेटली शेयर करते रहते हैं, या जहाँ पर भी जाते हैं अपने शूट वगैरह के कोई ना कोई पिक्स वगैरह सोशल मीडिया पर डालते हैं. क्योंकि आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप इसके डाई हार्ड फ़ैन हैं, दैट्स वाई यू फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पर इसके कुछ भी करने के अपडेट्स आपके पास आते रहते हैं. और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम, ये एक सरदार बंदा जो वो मोर लाइक अ फैशन आइकन भी है. सो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई जब भी वो कोई अपनी पोस्ट डालता है जिसमें कुछ नया उसने पहना होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं. एंड डेफिनेटली जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो सोशल मीडिया पर कभी ना कभी आप कमेंट भी देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी आपको रिप्लाई मिलेगा. एंड फाइनली यू वुड से कि डेफिनेटली आप इसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं, एंड ऑल दिस. एंड दिस इज़ प्रीटी मच ऑल. मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम बड़े आराम से 1-2 मिनट का क्यू कार्ड सैम्पल प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द सैम्पल आंसर ऑफ अ क्यू कार्ड लाइक दिस. Well, it is quite common among people to follow celebrities on social media rather than just watching them on screen or reading about them in magazines, as it gives them feeling of being virtually connected with them. And here I would like to talk about a famous Punjabi singer and actor whom I follow on social media, and he is Diljit Dosanjh. I follow him on Twitter as well as Insta, and there are many reasons behind why I follow him on social media. Firstly, being a student, I rarely get time to sit in front of television to follow celebrity shows. That's why whenever I get chance, I take his glimpse on Twitter. He's highly active on social media and keeps on posting something every now and then. Since he is a singer, so he often makes announcements of his upcoming music through this platform. As soon as he shares any post related to his music album, I immediately check it out. Similarly, he often shares some funny uncut shots to reveal what's going behind the scene during production that I find quite hilarious. His every tweet and post receive millions of views, and I always comment on his posts with a hope one day he will reply, as I am a die-hard fan of Diljit. The best thing I like about his personality is his dressing style. In fact, he is a trendsetter, and whatever he wears in his post on Instagram becomes a fashion next day. Today, he is so famous that social media is flooded with his posts, and people always talk about him, and it is my earnest desire to meet him personally one day and take a selfie with him to upload on my social networking platforms to gain some fame like him.
And that's it. So this is the sample answer of the person you follow on social media. In the comment section, tell me which other cue cards are still pending so that I could prepare more videos for you and share the sample answers with you shortly. Thanks for watching the video. Bye bye for now.